आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स। A triangle is a polygon having three sides, three vertices, and three angles. ये जो ट्रायंगल होती है इसके तीन एंगल्स होते हैं, साइड्स और तीन वर्टिसेस होती हैं। Now, what is classification of triangles? Classification of triangles is divided into two groups. First is classification of triangles according to their sides. साइडों के लिहाज से ट्रायंगलों की तीन किस्में हैं। नंबर वन इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। पहली जो ट्रायंगल है इसको हम इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। According to sides, triangles have three kinds. First one is equilateral triangle. A triangle whose all sides are equal is known as equilateral triangle. Second one is isosceles triangle. A triangle whose two sides are equal is known as isosceles triangle. वो ट्रायंगल जिसके दो साइड्स बराबर हो उसको हम आइसोस्केलस ट्रायंगल कहते हैं, और जिसकी तीनों साइड्स बराबर हो इसको हम इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। नाउ इट इज ट्रायंगल नंबर 3, स्केलेन ट्रायंगल। Scalene triangle, a triangle whose all sides are different. In other words, we can say a triangle whose all sides are not equal is known as scalene triangle. ये जो scalene triangle होती है इसके तीनों sides बराबर नहीं होते हैं। So, according to sides, triangles have three kinds: equilateral triangle, isosceles triangle, and scalene triangle. This figure gives us an idea of these three triangles. Part number A, that is triangle number A, all of its sides are different. इसके तीनों sides मुख्तलिफ है, so we call it scalene triangle. Triangle number B, इसके दो sides बराबर हैं, लिहाजा हम इसको isosceles triangle कहते हैं। Triangle number C, it is an equilateral triangle as all of its sides are equal. In classification of triangles, there are two groups according to their sides and according to their angles. This is classification of triangles according to their sides. साइडों के लिहाज से ये ट्रायंगलों की तीन किस्में हैं। अब हम देखेंगे according to their angles. एंगलों के लिहाज से भी ट्रायंगलों की तीन किस्में। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स अकॉर्डिंग टू देयर एंगल्स। इन एंगलों के लिहाज से जो तीन किस्में हैं वो ये हैं। नंबर 1, obtuse angular triangle. First one is obtuse angular triangle. Number 2, acute angular triangle. Number 3, right angular triangle. Now, what is an acute angle? An angle which is greater than 0 degree and less than 90 degree is known as acute angle. An angle which is greater than 90 degree and less than 180 degree is known as obtuse angle.
an angle which is equal to 90 degree is known as right angle. A triangle whose one angle is obtuse, वो ट्रायंगल जिसका एक एंगल obtuse हो उसका हम obtuse angular triangle कहते हैं. A triangle whose all sides are acute is known as acute angular triangle. वो ट्रायंगल जिसके तीनों एंगल acute हो उसको हम acute angular triangle कहते हैं. नंबर सेकंड. नंबर थर्ड, a triangle whose one angle is 90 degree is known as right angular triangle. This is classification of triangles according to their angles. साइडों के लिहाज से भी ट्रायंगलों की तीन किस्में हैं और एंगलों के लिहाज से भी ट्रायंगलों की तीन किस्में हैं. This figure gives us an idea of these three triangles. In this figure, we see triangle A. Triangle A. In this triangle, 30 degree, 40 degree, and 110. Two angles are acute and one is obtuse. So in this triangle, one angle is obtuse. So we call this obtuse angular triangle. Now in triangle B, 45 and 45, they are acute angles. Angle 90 degree is right angle. So this triangle is known as right angular triangle. Triangle number C, all of three angles are acute. So this triangle is known as acute angular triangle. So in classification of triangles, there are 6 kinds of the triangles. According to their sides, there are 3 triangles: equilateral triangle, isosceles triangle, and Scalene triangle. According to their angles, triangles have 3 kinds: obtuse angular triangle, acute angular triangle, right angular triangle. This is classification of triangles according to their sides and angles. इंशाल्लाह हम अगले टॉपिक में जो इसके बाद दूसरा पॉलीगॉन आता है यानी क्वाड्रेटर या जिसको हम टेट्रागॉन, इंशाल्लाह हम उसके बारे में आपको बताएंगे.